Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. Today, I'd like to talk to you about something which is very, very important in today's time because it is impacting the entire world. And that is the tariff war, which is going on in the world nowadays because of the decision which has been taken by an individual, the President of United States. So I used the word individual because though it may appear technically as to be the decision taken by a country to levy the same tariff as any other country would be doing so as far as their material or articles are imported by other countries. So what he is trying to tell people that why should we not reciprocate the same way as any other country is doing? So some people agree with him and some people say, no, it will bring a lot of chaotic situation in the world. And that is what has already been seen in the markets, and many businessmen, industries are suffering and they are recalculating how really we face this situation or come out of this situation. No, if you take it this way, that everybody is responsible for taking care of self and being good to self. But at the same time, if you find that the entire world or your neighbors or other people are being impacted or affected by that negatively, then you should think about it seriously. So you must be wondering, why did I bring this topic into discussion today? Though I always talk about the parenting and the education and the children's safety and their growth and all that. But when I was trying to understand what was happening around, though I didn't pay much attention to geopolitical situations and other things, but only one thing which came to my mind was that why is it happening so? Why is it so that one man who is so powerful, I mean the country is so powerful, is doing such an act which would be bringing a lot of hardship to a lot many people? Now you go back and think about certain things which we used to appreciate a lot. Today, we might be blaming the United States for what is being done by them. But there was a time when we would appreciate and they would boast of something, and that would happen so in European countries also, that everyone over there was given liberty, freedom. Their democracy means anybody can do anything, can say anything, can object to anything. And that what was preached by them without worrying that my freedom, my doing anything, how would it be impacting the other people around me? They did not focus much on that. And we were the ones who used to feel like bad because we were made to believe that our people were not objecting or questioning what was being told by elders to do. But look at the situation in India. It was entirely different. And I would say almost opposite, the contrast to what was happening in those countries. See here, the parents, Mata Pita, and the teachers, that is the guru, which we used to call it in ancient times, were the ones who were respected the most. They were the ones who were followed by the children, by the pupil, and whatever was told to be done by them, it was done. And most of the people did not agree to it. In today's time, so many people question it. Rightly so. I'm not saying that we should be following our gurus and our parents blindly without really getting involved in some decision making of that sort, which brings the application of the knowledge which we would have gained from them. Because when it comes to gaining knowledge, we usually do it from our elders, that we do it from our parents, and that we do it from our gurus. Like in our case, when I say guru, I mean you all are aware, at least in India, that guru means the one who takes you from darkness towards light. Gu means andhakar, that is darkness. Ru means light, prakash. So someone who takes you towards the light or brings out the best within you is called as guru. But it changed to teacher. And in Hindi, we started saying it as Shikshak. And many people believe that teacher means someone who gives knowledge to the people by charging some amount against some payment. Whereas in case of Guru, payment was not the consideration. It used to be Guru Purnima when something would be given to Guru or the Guru Dakshina at the end of the education completed by the child. So see, again, there seems to be a tremendous shift from what I started with. That is
the tariff war which is going on, and then all of a sudden to the rituals or to the policy or to the things which we used to follow in our ancient times, and we still follow it in our country. Because for anyone to seek knowledge, to seek its spirituality, you need to have a great, great guru. Not only guru, you have to have a very, very learned guru. And there was a time when everybody used to search for a guru. And I will give you an example. And many of you would be aware of it, but then I would like to remind every one of you about Kabir. Kabir was already a learned, a very spirituality oriented person, but then he still was seeking for a guru. And he came to know that Ramanandji was a great, great guru, and he wanted to be his pupil, his disciple. But he wasn't sure whether he would be accepted by that guru or not accepted by that guru. So one day, because in Banaras, if you all are aware, because Banaras is now so much in news in India today because of the development which has taken place in the last 10-15 years over there, that people used to come to Ganga river through those steps from their houses to take bath in holy river. So when they will be walking down on steps, so Kabir one day lay on one of the steps. And when Ramanandji was coming to take baths in holy river, he really touched the legs of Kabirji. And he felt very bad and he said, Ram, Ram. So Kabir stood up and said that I want to be your disciple. And Ramanji found this child was very, very much willing to become his disciple and took him in his arms. And ultimately he became his disciple. I mean, Ramanji became his guru. And you know, based on that, what Kabirji had written once, you all know it very well, that Guru Govind daun khade, kake lago paye, balihari Guru aapne Govind diyo bataye. So, you know, what he said was that it was Guru who had made him aware of God. So he rated Guru above God. Of course, people may, disagree with this, but then this is very, very important. Guru's role is as good as that of God. When it comes to parents' role is as good as that of God. And here it is very, very important for the people to really follow them. And in our culture, in Indian culture, it always happened. If you take the case of Lord Ram, Lord Ram, you know, he followed what his guru said, he followed what his parents said, without really questioning ever. Now, today's generation might really question it, that how could it happen so that everything what the parents were saying, everything what the guru was saying, was to be necessarily followed. I would not say that a child or a disciple should follow everything, even if it is wrong told by the parents. But be sure that you are able to measure it correctly, that whether what you are being asked to do is right or is not right. और वो आप तब इसका डिसीजन कब ले पाएंगे जब आपको ज्ञान होगा, जब आप स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझ जाएंगे, जब आप इंटेलेक्चुअल आपका लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा. और वो कहाँ से जाता है? वो गुरु से जाता है, अपने बड़ों से जाता है, उनसे हमें सीख करके जाता है. और हम इस बात को हमेशा मानते हैं कि देखिए, कोई भी हीट हो, वाटर हो या हवा की जब हम बात करते हैं, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाते हैं. ऐसा बड़ा कम होता है, नहीं होता, उसके लिए हम अलग से काम करना पड़ता है. जब लोअर एनर्जी से या लोअर प्रेशर से हम हायर प्रेशर की तरफ जाते हों, तो जब आप गुरु की लिए बात करते हैं, हमारे यहाँ तो देखिए एक बड़ा सम्मान गुरु का और पेरेंट्स का किया जाता है. हमारे यहाँ तो झुक करके पाँव छूते हैं अपने गुरु के और अपने पेरेंट्स के, और उसके पीछे ये है कि हमने आपको समर्पण कर दिया, हमें आप बेस्ट ऑफ द नॉलेज दीजिए, हमें बहुत अच्छी शिक्षा आप दीजिए, और इतना आपने सीखा है आपके पांव छू करके हम उसको ग्रहण करते हैं, वो हमारे अंदर आ जाए. हम खड़े होकर के, बिकॉज सेम लेवल पर खड़े होकर के एनर्जी उधर से हमारी तरफ नहीं फ्लो हो सकती. ऐसा मैं मानता हूँ. इस तरह से इस चीज़ को आगे कहा जाता है. और देखिए, गुरु के और आचार्य के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि पेरेंट्स तो जन्म देते हैं, शारीरिक जन्म कहाँ से होता है? पेरेंट्स के, फादर हमें देते हैं, मदर हमें देती है. लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक और बौद्धिक जन्म होता है, वो कहाँ से होता है? वो हमारे गुरु से होता है. वो गुरु हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो गुरु कोई हमें बाहर से भी मिल सकता है, लेकिन खोजना आपको है, जैसा कि पहले खोजा जाता था.
मैं जो बीच में एक बात आपको छोड़ गया कि भाई क्या हमें सारी बात गुरुओं की माननी चाहिए या अपने पेरेंट्स की माननी चाहिए? नहीं। जहां आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, कि जो आपको ठीक लगता है, जो आपको सिखाया गया है उसके अगेंस्ट है, तो आप उस बात को नहीं मानिएगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये शायद सिंध का एग्जाम्पल है। कोई एक संत खिल्लानी हुआ करते थे, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा। उनके कोई एक गुरु थे और उन्होंने उनको बहुत सिखाया, और सिखा करके काफ़ी नॉलेज देने के बाद में उनको कहा कि आपको हमेशा सत्य बोलना है, सत्य का साथ देना, कभी आप सत्य से पीछे ना हटना। ये संत खिल्लानी को सिखाया गया। अब एक बार क्या होता है कि वो गुरुजी जो थे उनके, वो किसी लिटिगेशन में फंस जाते हैं, कोई उनके खिलाफ कोई केस होता है या कोई बात होती है। और तब तक संत खिल्लानी की एक रेपुटेशन बन चुकी थी कि वो जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। तो गुरु ने उनको अपने पास बुलाया कि देखिए, मैंने आपको इतना ज्ञान दिया है, अब आपका गुरु दक्षिणा देने का समय है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप गवाही दीजिए और उस गवाही में मेरे फेवर में बोलें, जो कि सच नहीं था। तो देखिए, यहाँ पर संत खिल्लानी जो जो उनके शिष्य थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि आपने मुझे ये सिखाया है कि सत्य बोलना ही उचित है, असत्य बोलना उचित नहीं है। गुरुजी नाराज हुए, उनको कहा कि आप मेरे पास अब आइएगा नहीं। वो चले गए, लेकिन गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा उसके बावजूद भी कम नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने बाहर जाकर के गुरु का एक छोटा सा मंदिर टाइप बनाया और उसमें वो डेली आकर के बैठते थे, अपनी रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करते थे और चले जाते थे। तो बावजूद इसके कि उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरु के प्रति अकृतज्ञ हो गए। जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसके लिए वो हमेशा ग्रेटफुल रहे, और ये नहीं कि उन्होंने बात मानी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसमें स्वामी दयानंद जी का भी उदाहरण आता है, और कई जगह ऐसी बातें आती हैं जहां जो डिसाइपल थे उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली उस बात को नहीं माना। ये इतनी सारी बातें कहने के बाद मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं आपको कि जो हमारी आदतें होती हैं, जब आप अगर यही बात एक इंडिविजुअल को सिखा देंगे कि देखिए, आप अपनी मर्जी से सब कुछ कीजिए, आप ही सोचिए, जो आपको ठीक लगता है वही करिए, पेरेंट्स या गुरु जो कह रहे हैं आप जरूर नहीं है उनकी बात को मानेंगे। देखिए, बिना श्रद्धा के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और बिना ज्ञान के आप अच्छा कर्म कर नहीं सकते। देखिए, श्रद्धा, ज्ञान, कर्म, ये बहुत एक सीक्वेंस में चलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा चाहिए, अच्छे कर्म करने के लिए ज्ञान चाहिए। तो ये जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा किनके प्रति? अपने बड़ों के प्रति, श्रद्धा अपने पेरेंट्स के प्रति, श्रद्धा अपने गुरुओं के प्रति। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक ये ग्रेटिट्यूड वाली भावना नहीं होगी, तब तक थोड़ा सा गड़बड़ होगा, और सिर्फ सेल्फिशनेस की तरफ हम बढ़ेंगे कि जो मैं सोचता हूँ वही ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा क्यों कह दिया, मेरे गुरुजी ने ऐसा क्यों कह दिया। तो फिर हमें इस बात का भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों टैरिफ लगा दिया। क्यों डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो अपने लिए ठीक लगा उन्होंने किया, तो क्यों उसके ऊपर हम सवाल उठाते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो एक हैबिट बनती है, वो हैबिट आपको हर जगह तकलीफ देती है या हर जगह फायदा करती है। अच्छी हैबिट होगी, आपका कैरेक्टर अच्छा बनेगा। आपका कैरेक्टर अच्छा बनेगा, आप हर सिचुएशन में अच्छा ही काम करोगे, ठीक ही काम करोगे, आप पूरे सब लोगों को साथ में रखोगे। कई बार तो ये भी हुआ है कि अगर मुझे अपने आप को कष्ट दे करके और मेरे पड़ोसी को अगर उससे थोड़ा सा एडवांटेज होता है, वो तकलीफ से बाहर आते हैं, तो मुझे वो कष्ट ले लेना चाहिए। अगर इस भावना के साथ काम करते हैं तो फिर ये टैरिफ लगाने की सिचुएशन नहीं आती है, और टैरिफ लग भी जाती है तो दूसरे लोगों को फिर दर्द नहीं होना चाहिए, अगर हमें अपनी इंडिविजुअलिटी पे ही सिर्फ फोकस करना है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। जो बच्चे आजकल किन्हीं कारणवश, मैंने सुना है, देखा है, अखबारों में पढ़ते हैं कि पेरेंट ने मोबाइल देने के लिए मना कर दिया तो बच्चा नाराज़ हो गया, पेरेंट ने कोई और काम करने के लिए कह दिया तो बच्चा नाराज़ हो गया। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, और हम पेरेंट्स को भी ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो यंग पेरेंट्स हैं, जब मैं गुरु की बात करता हूँ, आचार्य की बात करता हूँ, एक शिक्षक की बात करता हूँ या टीचर की बात करता हूँ, जब ये डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ तो कई बार लोग थोड़ा सा इस बात पर उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे
तो हमें इसका बड़ा एडवांटेज नजर आएगा। और मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि सिर्फ वो इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ ही ना ढूंढें जहाँ से बहुत अच्छा पैकेज मिलता हो या बहुत अच्छा कोई प्लेसमेंट मिलता हो, बल्कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस ढूंढें जहाँ गुरु सच्चे हों और गुरु अच्छे हों। तो देखिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए और बच्चों को ये सिखाइए कि वो बड़ों का आदर करें, बड़ों की बात मानें, और बड़ों की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उनको ज्ञान अच्छा दें, सच्चा दें, और इस हिसाब से दें कि वो सिर्फ सेल्फिश बन के ना सोचें, बल्कि अपने समाज के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पूरे नेचर के लिए, सबके लिए सोचें। और हम उनको सिखाने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ वो चीज़ें हम खुद इम्बाइब करें, उनको हम खुद को फॉलो करें। तो आने वाले समय में कोई ऐसा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जो सिर्फ अपने लिए या अपने देश के लिए ही सोचेगा, वो शायद सारी दुनिया के लिए सोचेगा, और उससे दुनिया ज़्यादा खुशहाल होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। इन्हीं भावनाओं से, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। गॉड ब्लेस अस ऑल।